Good morning, friends. Today, we describe the respiratory system in insects. Respiratory system या श्वसन तंत्र, हम सामान्य बात करते हैं श्वसन क्या होता है। तो जनरल डेफिनेशन अगर हम देते हैं तो हम उसमें कहते हैं कि वायुमंडल से ऑक्सीजन का लेना और फेफड़ों से ऑक्सीजन का थ्रू ब्लड टिश्यूज तक पहुंचना, वहां पर बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक पहुंचाना और फेफड़ों से वापस वायुमंडल में निष्कासित करना। ये पूरा प्रोसेस जो है श्वसन कहलाता है। अब हम इंसेक्ट की बात करते हैं क्योंकि वहां फेफड़े तो है नहीं, इसलिए रेस्पिरेशन के लिए वहां पर जो हम डेफिनेशन देंगे वो हम कहेंगे कि प्रोसेस ऑफ इंटरचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एनवायरमेंट एंड द ब्लड। इंटरचेंज और एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन, कौन सी गैसेज? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द ब्लड और सेलुलर टिश्यूज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। Respiratory system is ectodermal in origin. जनरल रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ए प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी टिपिकली with the intake of oxygen and the release of carbon dioxide from the oxidation of complex organic substances. In insect, it's a complex network of tubes called a tracheal system that delivers oxygen containing air to every cell of the body. Air enters the insect body through valve-like openings in the exoskeleton. Till 1944 classified the respiratory system of insect on the basis of number and distribution of the functional spiracles are. इंसेक्ट में ट्रेकियल सिस्टम उपस्थित होता है और उनकी ओपनिंग जो होती हैं उनको हम स्पाइरेकल कहते हैं, एक तरह से श्वसन रंध्र कहते हैं। कितने अपर्चर्स हैं, कितने स्पाइरेकल्स हैं, ये हम देखेंगे और उसी के आधार पर ये क्लासिफिकेशन है। सबसे पहली बात हम यहाँ कहें होलोपन्यूस्टिक टाइप का। All spiracles are functional. It means two thoracic and 8 abdominal spiracles are functional in holopneustic insect. हम कई जगह टैक्सोनॉमी में हम कहते हैं होलोपन्यूस्टिक, हेमिपन्यूस्टिक, पेरिपन्यूस्टिक, एम्फिपन्यूस्टिक, कई सारे टर्म्स हैं वहां पे काम में हम लेते हैं। तो जहां पर सभी फंक्शनल हैं, जैसे ग्रासहोपर की बात करते हैं तो ये होलोपन्यूस्टिक है। हेमिपन्यूस्टिक में 1 और 2 नॉन फंक्शनल, बाकी फंक्शनल हैं। ये किसमें? कुछ लार्वीज हैं उनमें ऐसा। पेरिपन्यूस्टिक में 9 फंक्शनल, एक थोरैक्स का और 8 एब्डोमेन के। कुछ कैटरपिलर्स हैं उनमें ऐसा देखने को मिलता है। एम्फिपन्यूस्टिक टाइप के 2 फंक्शनल हैं, 1 एंटीरियर और 1 पोस्टीरियर, मींस एक थोरैक्स और एब्डोमेन। कुछ मैगट्स में ऐसा है। प्रोपन्यूस्टिक 1 functional, prothoracic spiracle is functional in puparium. Metapneustic 1 functional, last abdominal segment का in regular. Hypopneustic 7 functional, 1 thorax and 6 abdominal, जैसे हेड लाउस के अंदर। Anoustic, all spiracles are closed in aquatic and endoparasites.
hyperpneustic, presence of more than the normal spiracles, JPKD. And 10th number पे in Collembola, in Smithroids, one pair of spiracle present between the head and thorax. Thus, this is one is the distribution of the functional spiracles in insect. अब आप यहाँ स्पाइरिकल देखिए, कंपोनेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन कौन से कंपोनेंट हम यहाँ देखते हैं। और यहाँ पर पहले है स्पाइरिकल, ये स्पाइरिकल्स हैं, ये एक स्पाइरिकल है। और यहाँ पर आप इस कैटरपिलर के अंदर देखेंगे तो ये एक स्पाइरिकल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा, हर एक एरो एक स्पाइरिकल या एक अपर्चर को डिनोट कर रहा है। स्पाइरिकल्स कैसे होंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो पहली बात तो हम स्पाइरिकल की बात करें। इट इज द एक्सटर्नल ओपनिंग through which air enter into the trachea. Insects have about 10 pair of openings called spiracles in their exoskeletons. It has a chamber or an atrium with an opening and closing mechanism called the atrial wall. A spiracle is surrounded by a scleroid called peritreme. Closing and opening of a spiracle is regulated by atrial wall in dipterans, coleopterans, lepidopterans. Spiracles consist of sieve plate, peristigmatic glands present around the spiracles and prevents the wetting of organs. So this is all about the spiracles. Number second, 2, trachea. The trachea are the larger tubes or the tracheal system. Ectodermal in origin, क्योंकि ये क्यूटिकल से लाइनिंग है इसलिए इनको हम ectodermal in origin कहते हैं. Consist of epithelial cells, ectotrachea. The cuticular lining called intima. ये अंदर की तरफ जितने भी ये टिनिडिया और ये जो स्पाइरिकल्स देखने को मिल रहे हैं ये इंटाइमा. Helical folds of cuticular lining is the known as tinidia. Tracheoles, ये ट्रेकिया के बाद जो ब्रांचिंग मिलती हैं उनको हम ट्रेकियोल्स कहते हैं. और जहां पर ये ट्रेकियोल पहुंच रहे हैं उनके साथ में ये ट्रेक्यूलर सेल्स हैं. अब यहाँ देखिएगा ट्रेक्यूल्स, it is less than 1 mm in diameter and they ends blindly and closely contact the respiring tissues. Gaseous exchange occurs across tracheoles because these are thin tubular structures and cuticular lining is absent in these structures. Tracheoblast. The branches of trachea ends in polygonal cells consist of plasma lemma, cytoplasm and nucleus. Air sacs. Here are air sacs like this, one air sac.
This one is air sac in which the tracheoles are arriving. So air sacs are balloon-like structures, act as oxygen reservoir, provides buoyancy to flying in aquatic insect. In dry terrestrial environment, this temporary air sacs allow an insect to conserve water by closing its spiracle during periods of high evaporative stress. तो ये दूसरे नंबर की ट्रेकिया की बात थी। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। स्पाइरिकल्स हो गए, ट्रेकिया हो गया, ट्रेकियोल्स हो गए और ट्रेकियोब्लास्ट और एयर सैक्स। तो दीज आर द असिस्टेंट components of the respiratory system: trachea, tracheole, tracheoblast and air sacs. Respiratory pigments, larval images or the genus Chironomus, Mizes. यहाँ पर and endoparasite botfly larvae in the genus Gastrophilus have hemoglobin that enable them to extract oxygen from extremely hypoxic media. The hemoglobin of Chironomus has two heme groups and is 50% saturated with oxygen at less than 1 kPa compared to more than 3 kPa in vertebrates. The tracheal system of respiration. Here is the opening of the spiracle, external opening. Here is the hollow tube, that is spiracle, the opening, that is trachea, main trachea. Then it will be epithelium removed, or it will be branches into tubular blind structures. These structures are known as tracheoles. So here is the epithelial cells, or internally it will be lined by the cuticle, that is known as the lining or intima. एपिथेलियम यहाँ पे हट गई, कमजोर होगी, ये ट्रेकियल ब्रांच है और ये ट्रेक्योल्स हैं जो कि ये टिश्यूज के अंदर पहुंचते हैं। इस तरह से ये सिस्टम है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। देयर आर thus two distinct phases in the transport of gases, one through the trachea. Mechanism of respiration. There are thus two distinct phases in the transport of gases, one through the tracheal system known as the air tube transport, one through the tissues in solution in the cytoplasm known as the tissue diffusion. Diffusion. Net movement of atoms or molecules from higher concentration to low concentration is known as diffusion. The rate of diffusion inversely proportional to the square root of the molecular weight of the gas, so that in air, oxygen with a molecular weight of 32 diffuses 1.2 times faster than carbon dioxide with a molecular weight of 44. Due to its great solubility, the permeability constant of carbon dioxide in the tissues is 36 times greater than that of oxygen. As carbon dioxide is more soluble
It is present in much higher concentrations in the blood and tissues than oxygen, generally in the form of bicarbonates. Carbonic anhydrase is required to quickly convert bicarbonates to carbon dioxide. This enzyme is reported to occur in the tissues but not in blood. Convection. Convection is the bulk flow of fluid driven by a pressure gradient. Diffusion can suffice of gas exchange of many insects. Why is convection so common? Theoretical studies have demonstrated that use of convection rather than diffusion can decrease water loss rates even in small insects. Insects produce compression of the air sacs and trachea in multiple ways. The best understood is abdominal pumping. Abdominal compression leads to a reduction of body volume and a rise in hemolymph pressure that causes expiration. Expansion of the air sacs and inspiration results from the reduction of the pressure due to the muscular or elastic expansion of the abdomen. Changes in abdominal volume may be produced in various ways. Heteroptera and Coleoptera, the tergum move up and down. Ordonata, Orthoptera, Hemiptera and Diptera, both tergum and sternum moves. This discontinuous gaseous exchange. The membrane of the trachea and tracheoles and trachea and the carbon dioxide emission. The then occurs in discrete bursts when the spiracles opens. Relatively little gas exchange occurs while they are closed. This phenomenon is known as discontinuous gas exchange, discontinuous ventilation. It is common in adult insects when they are inactive at moderate to cool temperature, that is, when their metabolic rates are low. The pupae of many insects also exhibit DGE. Variation in gaseous exchange. Higher metabolic rate demands higher level of oxygen intake. This is most obvious in flight when metabolic rates can rise 5 to 30 folds. Gas exchange in flight. The massive increase in oxygen consumption that occurs when an insect flies require a greatly increased airflow through the trachea to the flight muscles. Function of the respiratory system. Provides the cells and tissues with oxygen to eliminate carbon dioxide and produce product of respiration. It gives some degree of buoyancy in aquatic insect, Infantum is Corborus diptera. Hemolymph circulation act as connective tissue and binds the organs together. Air sacs allow growth of the body. Tracheal system involved in sound production of Blatoidea by forcing air through the spiracles. Air sacs also help as heat insulator and to maintain body temperature. Tracheoles involved in light emission in fireflies. This is all about the gaseous exchange or respiration in terrestrial insects through the tracheal system. In next lecture, we will continue it the respiration in aquatic insect. Till then,
हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स ए लॉट।